Plan नहीं करी है. My name simply is Vedant Kaushik. I'm called Vedant Rusty on the internet. रस्टी के पीछे की कहानी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मेरा एक कज़न हुआ करता था जिसको रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज बहुत पसंद थी. One fine day he started calling me Rusty and ever since the name has stuck. Today I just chill and make videos on the internet, do podcasts and talk about stuff that I generally like and the audience seems to love it. So yes, the medium that I choose to interact with my audience is video. Primarily it's YouTube. Primarily it's the YouTube channel that I have called Vedant Rusty, where we do infotainment, movies, TV show, internet culture, pop culture. But there's also podcasts that I do. There's also productivity videos that I do. There's also random reels that I make on Instagram about stuff that I like. So video is where I connect with people, and thankfully because I've got a YouTube first approach, the audience is more likely to connect with me on other platforms. So my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of internet Moguls. Over to you. Oh, बड़ी जल्दी बता दिया आपने. इतनी quickly मैंने अपनी story plan नहीं करी है. My name simply is Vedant Kaushik. I'm called Vedant Rusty on the internet. Rusty के पीछे की कहानी थोड़ी ज़्यादा complicated नहीं है. मेरा एक cousin हुआ करता था जिसको रस्किन बॉन्ड की stories बहुत पसंद थी. One fine day he started calling me Rusty and ever since the name has stuck. Today I just chill and make videos on the internet, do podcasts and talk about stuff that I generally like and the audience seems to love it. That's what I'm doing these days, and मेरा motto यही है कि जहाँ comfort हो, जहाँ आराम से चीजें चलती रहें, बस वहीं पीछे चलते रहना चाहिए उसके. So that's what's happening. How old are you? I just turned 25 this May. Oh, congratulations. Thank So you. 25 में आपको ये मतलब what you're saying is आपका opening message है लाइफ में जहाँ चीजें आसानी से चल रही है चलते रहो. So you don't subscribe to this hustle thing. सुबह से शाम तक मरते रहो किसी चीज के लिए. I mean, you have this to work that hard. आसानी वाला थिंग is थोड़ा सा subjective. I don't believe in the fact कि आपको सिर्फ आसान चीजें करनी चाहिए. I would rather believe in the fact that you do things that you like and the things that you're passionate about with such hard work and dedication कि सामने वाले इंसान को लगे कि यार ये कितना आसान काम कर रहा है. On the inside you know कि इसमें मेहनत लगती है and you have worked to a level where it comes easy to you, but सामने वाले इंसान को लगे कि आसान है, and it's only when they try and do it that they realize कि maybe it's not that easy. But for you, because you've worked hard enough and because you've learned enough, because you've focused on acquiring those skills enough, आपके लिए beyond a point it becomes easy. So that is sort of what I mean when I say आराम से चलनी चाहिए चीजें. Okay, so Vedant, like your main medium to reach out to people is video and your Yes. YouTube and Instagram, right? Yes. How much time do you spend on both these channels every single day or in a week or in a month? So I think some context is needed here in the sense that at this moment I've got multiple YouTube channels. When I started off all the way back in 2017, I just had one YouTube channel जिसका purpose बस ये था कि मेरे को अपनी job में मैंने बोल दिया था, एक startup में I started working, मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे को ना बहुत ही लाजवाब video editing आती है. I'm a pro at editing, which I was not. So the only option I had was to learn video editing, and I thought इसके लिए YouTube channel start कर देते हैं. It took me 2.5, 3 years to get to the first 2,000 subscribers on my channel. And since then, when I quit my job to pursue my master's, I realized I've got this extra time at hand, which I can now put into my YouTube. So that is when my YouTube started to grow. And one of the perks of being a YouTuber is that you do not have to worry about growing your audience on other platforms. As in, I do not have to work specifically to make content on Instagram, to make content on Twitter, because YouTube pay and through video and through the podcast that I do, I've got this unique opportunity where I can connect to people on a level that other platform users cannot. वो लोग मेरे को automatically Instagram और Twitter वगैरह पे भी ढूंढ लेते हैं. तो yes, the medium that I choose to interact with my audience is video. Primarily it's YouTube. Primarily it's the YouTube channel that I have called Vedant Rusty, where we do infotainment, movies, TV show, internet culture, pop culture. But there's also podcasts that I do. There's also productivity videos that I do. There's also random reels that I make on Instagram about stuff that I like. So video is where I connect with people, and thankfully because I've got a YouTube first approach, the audience is more likely to connect with me on other platforms. Okay, YouTube first approach. Fine, yeah. Fantastic. So tell us, people who want to get started, what is your think? यार 100,000 subscribers कब बनेंगे? कब वो silver plate आएगी? उससे पहले कोई फायदा नहीं है. उससे कम में business नहीं हो. Yes, I saw that. That's a big achievement. Congratulations. Thank you. So,
What is your message to them? I think most of the people that I get this question a lot, to be frank, कि यार YouTube पे शुरुआत कैसे करें? How do we get to 100,000 subscribers? मैं उनको बस यही बोलता हूँ कि यार मेरे को तो 100,000 तक पहुंचने में 4 साल लग गए, मेरे को तो 2,500 तक पहुंचने में ही 2.5 साल लग गए थे. तो I will not be the right person to tell you कि तुम आज शुरू करो और कल तुम्हारा काम हो जाएगा. The only advice that I give consistently and the only advice that frankly works is that you just have to start with the intention of making the best stuff that you can under a particular deadline. So अगर मेरे को इंसान बोलता है कि यार मैं रोज की एक वीडियो डालूंगा, मैं बोलूंगा मत डाल. You will not be able to deliver your best work in one video a day. मैं तो जो भी शुरुआत करता है ना, in fact I've got a workshop slash mentorship thing going on around YouTube, and every single student there I've taught with the philosophy that you have to take it from a year long perspective. कि तुम एक साल तक हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो हफ्ते में पब्लिश करोगे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंस. रिगार्डलेस तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो तुम्हें एक साल तक one video a week at least you have to push out. Maximum 2 हफ्ते, मतलब हफ्ते में 2 videos कर लो. But until unless you do that, you will not be able to figure out what you want to make. You will not be able to figure out what your audience wants to watch. And यही advice रहता है मेरा कि एक साल का time frame लेके चलो. उसके बाद अगर तुमको कोई कमी आए तो तुम जाके सीखने की कोशिश करो. But in that 1 year, I can promise you, if you do that for a year, you will learn enough by yourself, more than anyone like me or anyone else could ever teach you. तो एक साल करो, उसके बाद तुम्हें अपने आप सीख जाओगे. That is the advice that I would give out to anyone who's starting. So have at least a medium to long term approach to YouTube. What about tools like Tubebuddy and VidIQ? Do you actually look at those tools and say मैं क्या content बनाऊं, कैसे बनाऊं, what are people searching for? How do you decide मैं किस बारे में बात करूं रोज? Yeah, to be frank, yeah, Avi, I only make content about stuff that I particularly like. I haven't yet, I mean, I did try it in the middle where I was talking about things that are trending, talking about things that people are probably searching for more, but I realized कि long term में ना मेरे को खुद वो बनाने में मजा नहीं आता. वो खुद बनाने में मेरे को इतना मजा नहीं आया, मैंने बस बना दिया फॉर द सेक ऑफ इट. सो ऑफ कोर्स दीस टूल्स लाइक VidIQ, TubeBuddy, there are 100 others. They are helpful in terms of you understanding कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, so that you can decide कि ठीक है, अगर ये नहीं चल रहा, मेरे को इसमें मजा भी नहीं आ रहा, तो maybe I can discard it. But it all can only be built upon the fact when you realize कि तुमको क्या बनाने में मजा आता है. What kind of content does your audience interact with more? उसके बाद तुम जाके TubeBuddy में देख सकते हो कि ठीक है SEO स्कोर कितना है. उसके बाद तुम keywords everywhere का टूल इंस्टॉल करके देख सकते हो कि ठीक है ये कीवर्ड ज्यादा इंटरेस्टिंग है. फिर तुम देख सकते हो कि यार मेरी ऑडियंस ये और चैनल्स भी देखती है, मेरे को इनके साथ कोलैब करना चाहिए. Until unless you've got that fundamental of making stuff that you want to make, finding your editing style, finding your personality style, ये टूल्स वूल्स किसी काम के नहीं है तुम्हारे until unless that fundamental is set. तो अभी हमारे ऑडियंस में बहुत सारे यंग लोग देख रहे हैं, सुन रहे होते हैं हमारे को. तो पॉडकास्ट का नाम है इंटरनेट मोगल्स ऑफ द वर्ल्ड. एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम एन इंटरनेट मोगल. तो इन यंग लोगों को आपको क्या एडवाइस है कि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूं जो कहते हैं सर मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं यूट्यूबर बनूंगा. आपने कितने यूट्यूब वीडियोस बनाए? नहीं, अब मैं शुरू करूंगा, मैं बाइक वगैरह सब खरीद रहा हूँ. सो व्हाट इज योर ट्रांजिशन दैट यू रेकमेंड? ठीक है, आपको पैशन मिल गया, आपके पास जॉब है, साइड में कीजिए, शाम को कीजिए, वीकेंड पे कीजिए. एट व्हाट लेवल should they become a full-time YouTuber, and at what level and what kind of monetization can they expect from YouTube? So there is a mathematical rule to this and there is a mental model rule to this. We'll talk about the mental model rule first because that is more important. So I'll talk from my perspective. मैं जब शुरू किया था तो like I told you, I started off with my startup job. And it took me 2.5 years of consistently doing that, making a video every week, making a new video on a new topic, on a new movie show, a movie or a TV show, for 2.5 years to realize कि वो consistency कितनी important है. All of that I was doing with my job, a proper startup job, जिसमें आप दिन के 9 घंटे नहीं, 10, 12, 13, 14 घंटे भी काम कर रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, आप वापस भी आ रहे हो. तो you have to have that level of consistency before you can even think of turning into a full-time YouTuber. Because मेरे को पहला YouTube का पेमेंट आया था I think $100. वो जो सबको $100 का ही आता है, बट मेरे को वो आने में 2.5-3 साल लग गए थे. तो मैं इस उम्मीद में तो कभी नहीं छोड़ सकता था जॉब कि यार यूट्यूबर बनेंगे. एंड द मैथमेटिकल मॉडल टू दिस इज दैट for 6 months, if YouTube is making you more revenue than what your job is making you, not particularly just YouTube ads, maybe brand deals, maybe sponsorships, maybe you have subscribers that are subscribed to you and paying your monthly fee, maybe you are selling some merchandise. If you can sustain more revenue than what you would earn from your job over 6 months, then you can probably think about quitting your job. मेरे तो जॉब क्विट करने का रीजन बहुत सिंपल था. I wanted to pursue my masters.
तो मैंने अपनी जॉब क्विट करी, मास्टर्स करने चला गया, विच अलाउड मी दैट एक्स्ट्रा टाइम दैट आई कुड देन फोकस ऑन माय कंटेंट. बट वो ट्रांजिशन करने में मेरे को 2.5 साल की नॉलेज लगी. दैट मैथमेटिकल मॉडल आई थिंक इज गोइंग टू बी फिट फॉर मोस्ट पीपल इफ यू आर अर्निंग से वट एवर अमाउंट इन योर जॉब पर मंथ एज अ सैलरी, एंड यूट्यूब पे आपको वो सेम अमाउंट मिल रहा है फॉर 6 months, then it's sign enough कि you are putting in enough time and effort that you can confidently say कि अब मैं full time एक try कर सकता हूँ switch करना. That would be the YouTube में advice. आपने बताया कि YouTube ads, merchandise, people paying you to subscribe the channel. But उसके अलावा अगर मैं architect हूँ, doctor हूँ, lawyer हूँ या कोई भी merchant हूँ, so I can also give good content and ask people to do queries and generate inquiries, and that inquiries I can give to my sales team or myself. Of और course, वो of भी मेरे course. को बहुत बड़ा business बन सकता है. Yes, so there is this, what you've told is just a simple differentiation between two types of content creators. One is who's a content creator first, whose primary job is to create content. And second, who's a business person or an entrepreneur first, and then a content creator second. In the first case, the content is what fuels your revenue. Content सबसे ऊपर है, उसके अंदर revenue है. For the other person, content is a means of facilitating that your main business gets more leads, gets more engagement, gets more awareness in the mind of the people. तो ये difference समझना बहुत जरूरी है for anyone who's starting out कि आपको कौन सा type का creator बनना है. दोनों तरफ पे आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो, दोनों तरफ पे आप अच्छी तरीके से ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो, दोनों तरफ पे आप रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हो. बट द प्रायोरिटीज एंड द पाथ दैट यू गोइंग टू टेक हैज टू बी सेट वेरी स्पेसिफिकली. बिकॉज अगर एक आर्किटेक्ट फुल टाइम जॉब छोड़ के, अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ के कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा, तो इट वोंट डू एनी जस्टिस टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट दे हैव पुट इन देयर previous life, until unless they definitely don't enjoy it. अगर उनको बिल्कुल मजा नहीं आता डॉक्टर बनने में, then maybe they can, again very subjective, but वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि you want to be first type of creator or a creator who is making content for facilitating their business. तो ये differentiation अगर आप समझ सकते हो as a content creator, then it becomes slightly easier for you to decide कि कितना content बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है. Okay, got it. That's a very, very nice, very structured answer to that. So, जब आप कंटेंट बनाते हो, जब आप कंटेंट बना ही रहे हो, तो उसी को आप पॉडकास्ट में भी यूज करते हो, उसी को इंस्टाग्राम में यूज करते हो, या सबके लिए अलग कंटेंट बनाते हो? So the reason that I have multiple channels is because I wanted to experiment with what kind of content I actually like to make. So on my main channel, Vedant Trusty YouTube channel, I make content about case studies, about internet, about pop culture. तो वो कंटेंट मैं पॉडकास्ट में यूज नहीं कर सकता हूँ. माय पॉडकास्ट व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीज विद रस्टी इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉडकास्ट फ्रॉम व्हाट यू वुड प्रोबब्ली सी ऑन द इंटरनेट, बिकॉज इट्स अ वेरी लेजर काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट. वहां पे मैं अपने दोस्तों को या फिर जिनकी स्टोरीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है उनको बुलाता हूँ और फिर हम 1-2 घंटे बस बातें करते हैं. देयर इज नो एजेंडा टू द पॉडकास्ट कि आज हम सीखेंगे ये सब. इट्स जस्ट अ वेरी चिल कॉन्वर्सेशन. तो उसको मैं यूज एज सच नहीं करता हूँ, बट आई कैन पुट स्मॉलर क्लिप्स आउट ऑफ इट and then maybe put it on my clips channel or put it on my podcast ka Instagram page. So of course repurposing content is a thing that a lot of people do. It's proven to be a lot of success for a lot of other people. I particularly don't do it with that intention कि मैं बस एक बार content बनाऊंगा और उसको हर जगह यूज करूंगा, because it comes naturally to me to create different kind of content. And plus at this point I've got a team which helps me a lot in managing multiple channels. But it depends again on the person who's making the content. It becomes easier for you if you have one long form content which you can then subjugate into different platforms. आप Twitter पे भी use कर सकते हो, Instagram पे भी कर सकते हो, LinkedIn, Facebook, you can use it anywhere. I personally don't like to do it that way because मेरे different channels हैं, सब पे different context है, सब पे different content है. तो मेरे लिए that might not work, but it can and does work for a lot of other people. Got it. So tell us, all the people who want to get into this content space, YouTubing, आप एक अपनी दिनचर्या या something about your week, can you tell us? I have a team, पहले हम content के बारे में ideation करते हैं, फिर हम ये, मतलब how does it work? और To वो be भी frank यार, multiple channels. it's मतलब not हर it's it's एक not channel नहीं start होता, it's आपके not that multiple it's channels. not that I mean it does look थोड़ा organized from the outside, but it's not that organized particularly. Okay. So for example, if I have to publish a podcast every Friday, तो मेरे इस time I think I've got about 8 to 10 episodes recorded already. तो अब मैं अगले हफ्ते से रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा. I've already got 7 weeks का बफर. 7 हफ्ते का बफर मेरे पे है. इन दो 7 weeks I can then plan आगे का content. I can then plan आगे के podcast. So it gives me थोड़ा time to relax. तो अगर मेरे को फिर ऐसी जल्दी नहीं होती कि यार इस फ्राइडे पॉडकास्ट जाना है, मंडे को रिकॉर्ड करना है, ट्यूसडे को फाइल्स भेजनी है, ट्यूसडे को एडिट करना है, फिर उस पर रिव्यू करना है. वो हेक्टिक चीजें मैंने ट्राई करी हैं. I've realized that it just affects the quality of the content that I want to make.
I like to live in a thoda free flowing, thoda relaxed state always, so that these ideas which I have, they can be nurtured properly. So what a typical day in my life usually looks like: I wake up usually in the morning around 7:38, कभी कभी 9 भी बज जाते हैं. उठ के कभी थोड़ी किताब पढ़ लो, फिर थोड़ी कॉफी वॉफी ले लो. If I've got a video to edit, then अगर if I've got a video to record, तो उसके लिए पहले स्क्रिप्टिंग होगी. उस स्क्रिप्टिंग में एक दिन दो दिन जितना टाइम लगेगा लगेगा. फिर वो रिकॉर्ड होगी, फिर वो एडिट होगी, फिर वो अपलोड हो जाएगी. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल, बट आई डोंट take a lot of pressure onto it. Of course, within this we have weekly meetings with the team कि ठीक है इस हफ्ते ये काम करा, इस हफ्ते ये काम नहीं करा. It is not as structured as most people would have it, but I've realized it doesn't work for me when I have it too organized. मेरे को ज्यादा स्ट्रेस देने लगता है कि यार यही सेम काम मैं अपने ऑफिस में भी कर रहा था कि सुबह ईमेल है, सुबह ये मीटिंग है. I did not leave that to go back to that in my content creation space. मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मेरा माइंड रिलैक्स्ड रहे, ताकि मेरी सराउंडिंग्स एकदम कंफर्टेबल रहे, ताकि मैं बेस्ट काइंड ऑफ कंटेंट प्रिपेयर कर सकूँ. So my goal and the things that I strive for is to have a relaxed environment around myself, so I can then focus on creating the best quality content, because it's very important for a creative product to come out right, and it only happens when the creator's mind is relaxed. Perfect, I love that. अभी recently मैंने गैरी वी की पूरी टीम को में से वो जो Babin, I don't know if you know Babin. Babin used to do all the videos for Gary Vee, and I just interviewed him. And आपको वो इंटरव्यू अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसी बातें बोली थी कि मैंने जॉब छोड़ा था वो करने के लिए जो मुझे अच्छा लगता है. So इस प्रोसेस में आपने मल्टीपल चैनल्स बनाए. That means you know that all the channels will do well. आदमी मल्टीपल चैनल्स बनाता है तो you know that एक प्रॉपर्टी खरीदी अच्छी चल रही है, अब इसी बिजनेस में 5 प्रॉपर्टीज और खरीद लेते हैं. तो आपने डिजिटल एसेट के ऊपर आप काम कर रहे हो. जहां लोगों से एक चैनल के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपने मल्टीपल चैनल्स बना रहे हो. Does that mean that you've cracked the code that मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे ग्रोथ होएगी? और क्या cracking the code, is that something, is that a real thing? I mean, there is some science behind cracking the code, cracking the YouTube algorithm. For me personally, it's just a gamble that I took. I started multiple channels 2020 के January में. When I hit 25,000 subscribers on my main YouTube channel, I realized that I've got this figured out. I know how the main channel works. What can I do that will challenge me even more, that will push me beyond what I've already established? So I thought मेरा channel का नाम है RUSTY. Rusty is the spelling. So I will make a channel with the first letter of every, मतलब RUSTY से सब channel ले लेंगे. So Vedant Rusty is the main channel. U stands for Uncut Rusty, which is where I put my live streams, vlogs. S stands for Stories with Rusty, which is my podcast. T is because I wanted to do something in tech. And Y is U and Rusty, which is about my lifestyle, productivity, वो सारा. So I thought ये चीजें करते हैं because I liked watching all of these verticals के अंदर content. And the logic or the hypothesis was कि if I like watching this, I might like creating these as well. So over the last year, I have got certain amount of success across all of these. My podcast has started to rank. My podcast, I think, ranked in the top 20 in the country just with 30-40 episodes. The You and Rusty channel has just hit 6,000 subscribers. उसपे मैं book reviews वगैरह करता हूँ जो मेरे को काफी पसंद है. The vlog channel is just the space where I go to chill. मैं live stream करता हूँ, कुछ भी random डालता हूँ, so it helps release the creative tension. The tech channel has now turned into a tech podcast, which I do with my flatmate Jay. तो वो सारी चीजों में कुछ ना कुछ निकला है. But the reason I started doing those was A, because I wanted to challenge myself. B, because I wanted to create content across all of these verticals. And C, I wanted to do something long term. यूजुअली जब लोग सेकंड चैनल थर्ड चैनल खोलते हैं वो इसलिए खोलते हैं कि मेन चैनल एक अलग है, तुमको व्लॉग भी बनाना तो सेकंड चैनल खोल दो. आई वांटेड टू सी इफ इट कैन बी डन द अदर वे अराउंड. कैन यू ग्रो ऑल ऑफ दीज मल्टीपल चैनल्स, ऑल ऑफ दीज मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन सोर्स simultaneously? So far that experiment has proven to be somewhat of a success. In fact, it is done better than I was expecting it to. तो बट इसका रियलिटी क्या एक्चुअल इम्पैक्ट होगा वो हमको आज से 3-4 साल बाद पता चल पाएगा. आई लाइक टू प्ले द लॉन्ग गेम. आई लाइक टू प्ले ओवर द लॉन्गर टर्म. तो मैं 3-4 साल बाद ढंग से जवाब दे पाऊंगा कि ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा. बट सो फार आई हैव हैड फन डूइंग इट. आई हैव बीन एबल टू मैनेज इट प्रीटी वेल. माय टीम हैज बीन एबल टू हेल्प मी मैनेज इट प्रीटी वेल. तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है. आई होप आगे भी चलता रहे. So when you're saying the team is able to manage it, means that periodically आप videos बना रहे हो, वो edit हो रहे हैं, time पे जा रहे हैं, and they'll be ranking on the right keyword. So धीरे धीरे growth दिख रही है, तो आपको लग रहा है you're saying it's being managed well.
Yeah. So you're saying that one of the things that is keeping you so chilled out about the whole thing is अगर वो you don't need them this to start giving you money tomorrow और आपको पता है कि होने भी नहीं वाला कल. So you're taking it slow and steady, focusing and enjoying the ride. At the same time, you're looking at the numbers, how they're increasing. If they're not, then you're going back to the analytics, seeing what video to be done, having a discussion with the team. So you're not saying karam karo phal ki ichha mat karo. You're saying do your best and leave the rest. Yes, I mean that's a nice way to put it. Do your best and then the rest will just follow. I've also realized the fact that, yeah, if you start thinking about money and income and revenue very actively now, then uska downfall shuru ho jata hai. When you start thinking about money passively, as in I want to first make the best kind of content I can and then the money will follow, that has worked better for me than just thinking about कि यार ठीक है इस चैनल पे ये स्पॉन्सर्ड रील चाहिए, इंस्टाग्राम पे इस रील पे ये स्पॉन्सर चाहिए, ये मेरा कोर्स है, ये इतना बिक रहा है, इतना नहीं बिक रहा. I would rather just focus on making the best kind of content across all of the verticals that I've decided, and money would follow. And ये इसलिए भी आता है because I've spent the last few years, I think since 2016 or 17, I've been working in the influencer marketing space and the content creation space. So I have some sort of an intuition around how and where the money follows. So I can then subconsciously maneuver my content, maneuver my strategy in a direction where I know money will follow. If not tomorrow, then 6 months from now, 1 year from now. तो अभी इमीडिएट ऐसी कोई क्रंच नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है, which allows me the liberty and the privilege to focus on creating the best kind of content. So do your best and leave the rest might be the right way to put it. Yes. Awesome. So Vedant, 100,000 से तो थोड़ा डर लगता है. हाँ. लेकिन जो लोग हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, क्या 5,000 के बाद भी can I call it a business? You can call it a business with even 100 subscribers, yaar. Okay. I mean, I don't like to use the word business here, because when you start calling your content creation journey as a business, then you become very number focused, you become very analytics focused, and it's not a wrong thing to do. A lot of people have gotten a lot of success with this mindset. For me personally, I like to think of it as providing value to the audience, providing value from my perspective, providing value through things that I like. And business तो आप उसको 100 सब्सक्राइबर से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, 1000 फॉलोअर्स तक से कर सकते हो. If those मतलब we have to understand that whatever number of followers or number of subscribers you have, it's not just a number. There are actual real life people behind those numbers. And your goal should not just be कि ये 1000 का नंबर मेरे को 5000 करना है, ये 5000 का 10,000 करना है. Your goal should be कि चाहे वो नंबर 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, they should have that amount of faith and trust in me as a creator कि अगर मैं उनको कभी कुछ आगे जाके बोलूं कि ठीक है, I would like you to buy this on my recommendation, I would like you to subscribe to this product, I would like you to support me by purchasing this or by going to this website, they won't डाउट कि यार इसके इंटेंशन हमको धोखा देने के तो नहीं है, इसके इंटेंशन हमारे को कुछ बेकार चीज बेचने के तो नहीं है. बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम अ बिजनेस फर्स्ट पर्सपेक्टिव, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रेवेन्यू, एंड फिर वो साइकिल विशियस सर्कल में बदल जाता है. बट इफ यू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दोस पीपल फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, यार ये लोग इंसान है, मैं इनको वैल्यू दे सकता हूँ तभी मेरे पे भरोसा करेंगे, मैं इनका भला करूंगा तो मेरा ही भला होगा, then it becomes slightly easier for you to think of it from a revenue generation perspective, because it just happens organically. V Friends के टोकन खरीदे आपने? V Friends के not yet. Okay. So I've got two more questions for you. Yeah. One is that ये जो जर्नी है, जैसे आपने बोला I want to go to that business route. आपने कहा दोनों तरीके हैं, आपने देखना है आप content first हो या business first हो. Yeah. So let's go to the business first person. एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक कोर्सेज आजकल लोग बहुत बेच रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को बना के कि मैंने जिंदगी में क्या किया. Even I have got a couple of them. हमारे कम्युनिटी में there's this lady who lives in a joint family of 20 people. उन्होंने कोर्स बनाया कि joint family में खुश कैसे रहो, and she's selling 100 courses a month. Oh wow. इतनी बड़ी मार्केट इंडिया में. There's this lady who's telling people how to create 1 lakh rupees business with your mother-in-law. Oh wow. उसने अपने कोर्स में वो क्या करते हैं, वो बर्तन बेचते हैं बेसिकली. वो सिर्फ बर्तन बेचते हैं. YouTube पे चैनल है उनका, WhatsApp पे है, रोज सुबह बताते हैं ये बर्तन हमारे पास है. Oh yeah, my mother also watches these things. Okay, so ये वाला उसमें सीजन में 1 लाख रुपए मैं बना लेती हूँ, 1 लाख मदर इन लॉ बना लेती है, और बिजनेस के चक्कर में हमारी लड़ाई भी नहीं होती क्योंकि हम दोनों बिजी रहते हैं. तो हाउ टू बी हैप्पी विद योर मदर इन लॉ, उन्होंने अपना नीश बना लिया है. तो एक तो डिजिटल कोर्सेज हो गए, एक हो गया कि सर मेरी तो क्लिनिक है, मेरे को इंक्वायरी नहीं आ रही, या मैं कोई सामान बेचता हूँ, मेरे को इंक्वायरी नहीं आ रही. सो उसमें 1000 लोग, जैसे आपने कहा 1000 लोग हैं, 1000 ह्यूमन बीइंग्स है, उनको लाके
एक एक आदमी का ध्यान रख के उनको वैल्यू दे के, that can become a decent business. Of course उसके it बारे में can. can you give us some ideas on how So those people let's should approach content? let's take a couple of examples in this case, and I'll take these examples because I've seen these people do it. तो जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे बहुत ही सारे लोकल बिजनेसेस हैं जो फर्नीचर बेचते हैं, साइकिल्स बेचते हैं, 100 different things. I know of a couple of them who started this content creation journey. उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया, वहां पे वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में लोगों को एजुकेट करने लगे. उन्होंने आई थिंक आई हैव कंसल्टेड अ कपल ऑफ देम अराउंड दिस कि आप कौन से हैशटैग्स यूज करके इस पर्टिकुलर शहर की ऑडियंस को आउटरीच कर सकते हो, बिकॉज सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं एंड यू आर मोर लाइकली टू डिस्कवर थिंग्स अराउंड यू इफ यू आर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ कीवर्ड्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया. मेरे एक स्कूल फ्रेंड है जिसका आई थिंक स्पोर्ट्स गुड्स का बिजनेस है. उसने बस अपने खुद के पर्सनल पेज पे, अपने खुद के जो स्टोर है उसके पेज पे बैट्स के बारे में बात करी, क्रिकेट बैट्स के बारे में, क्रिकेट बॉल्स के बारे में. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वो बिजनेस काफी सक्सेसफुल हुआ बिकॉज लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उसमें. So Right. it's not difficult for you to gather a small audience if you're just talking about things that you're passionate about. अगर मेरा बिजनेस होता से एसी और एसी के रिमोट्स का और मुझे इनके बारे में नॉलेज है तो मैं इनके बारे में चीजें बना सकता हूँ. मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे पे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से इस प्रोडक्ट पे ये फीचर्स हैं, इस प्रोडक्ट पे ये फीचर्स हैं, अगर आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत है तो आप इस स्टोर पे आ सकते हैं. एंड बिकम्स इजियर बिकॉज एनी वे फॉर दी स्मॉल बिजनेसेस. एंड अभी हम स्मॉल बिजनेस फोकस कर रहे हैं बट यू कैन स्केल दिस टू एनी लेवल ऑफ बिजनेस, यू कैन स्केल दिस टू एनी प्रोफेशन, बिकॉज द फैक्ट इज कि आपको उस चीज के बारे में पैशन है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है. आपको बस क्या सीखना है कि उसको आर्टिकुलेट करके अपने आसपास के लोगों तक कैसे पहुंचाना है. Once you figure that out, I think it becomes easier for you to get more leads, get more attention, get more DMs and requests about the things that you are offering to the general public. But fundamental इतना सही है, जिन चीजों के बारे में आपको पता है, जिन चीजों से आपका काम चलता है, अगर आप उन चीजों के बारे में सोशल मीडिया पे, डजेंट मैटर कौन सी सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी पे भी अगर आप बात करते हो देन चांसेस आर कि लोग उसको डिस्कवर करेंगे. बट अगर आप इसी डर में रह जाते हो कि यार मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, क्या ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो फिर तो आप बस इसी सोच में रह जाओगे कि यार कि क्या ये चलेगा नहीं चलेगा. यू विल हैव टू Got it. ट्राई आउट, यू विल हैव टू पुट आउट द बैड स्टफ टिल यू गेट टू द गुड स्टफ. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्टार्टिंग. वेदांत, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास डीएसएलआर कैमरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ मोबाइल फोन है, क्या मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? मैंने इनफैक्ट पिछले महीने तक मैं अपनी सारी वीडियोस ना, कहाँ गया मेरा टैबलेट, मैं टैबलेट नीचे रखा है, मैं अपने लैप आईपैड के फ्रंट कैमरा पे रिकॉर्ड करता था. मेरे पे अच्छा, एक आईपैड ही था जिसपे मैं कॉलेज में तो ये गया था. पीछे वाला जो सर्टिफिकेट है, ये जो 100, ये जो यूट्यूब या का जो ये सिर्फ जो आईपैड पे आया है, ये सिर्फ आईपैड पे आया वाह, है. वाह, एंड द फैक्ट इज कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है, चलो ये तो फिर भी एक आईफोन है, मान लिया इसका कैमरा बेटर है, एक और मेरे पे मेरा पुराना फोन, एक सेकंड, एक ही मेरे पे मेरा पुराना फोन है, ये फोन मेरे पे ना आई थिंक 2018 से था, पिछले साल अक्टूबर में मैंने ये लिया है. उससे पहले मैंने सारे ऑडियो ना अपनी शर्ट के ब्रेस्ट पॉकेट में यहाँ रख के रिकॉर्ड किए हैं, सामने आईपैड का कैमरा लगा है, यहाँ पे रिकॉर्ड करे. इट्स अ गुड इनफ क्वालिटी कि लोग उसको देख सकते हैं. अगर बात मैं पते की कर रहा हूँ तो लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि यार कि ऑडियो क्वालिटी कैसा है या फिर वीडियो क्वालिटी कैसा है. इट्स अ मैटर ऑफ द फैक्ट कि आप जो बात कर रहे हो आप उसके बारे में कितने पैशनेट हो, कितने आर्टिकुलेट हो, कितने नॉलेजेबल हो. मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मेरे को उनको बनाने में मजा आता है, मैं उन पर प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि यार कि ऑडियो क्वालिटी में 19-20 या 18-20 चलेगा. बट अगर काम की बात नहीं कर रहे हो तो आप चाहे प्रॉपर एक डीएसएलआर कैमरा लेके प्रॉपर एक प्रोडक्शन स्टूडियो बना के भी अगर बेकार बात करोगे तो कोई क्यों देखेगा उसको. तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि आप पे गियर है या नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप कितने अच्छे यूटिलाइज कर रहे हो. हु डू यू लाइक मोर, ध्रुव राठी और रणवीर राधाबाली? I mean, I don't have a preference for either of them, but I mean, both of these guys have been someone that I have watched while I was still watching and not making content. For example, my podcast would not have existed if I had not listened to Ranveer's podcast. The kind of videos that I make on my main channel have a lot of influence from the earlier Dhuvrati videos. तो ऐसा कोई preference नहीं है मेरा. तो I mean, हाँ, ऐसा कोई preference तो नहीं है, देखता तो मैं दोनों को ही हूँ. हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? या नहीं, आप मुझे बताओ कि आप किसके जैसे, हमारे अंदर कोई होता है, लाइक आई एम अ बिग गैरी वी फैन, आई मेट गैरी वी मेनी टाइम्स एंड आई सैट डाउन विद हिम एंड आई लर्नड फ्रॉम हिम एंड हाँ. यू नो, and even now, every time I have a business problem, I look at his channel because I'm running an agency, he's running an agency. मुझे लगता है कि There that's are a lot it, of similarities. lot Yeah. of similarities. So what do you think? Who's your So favorite? So when I started off making YouTube videos, my goal was to become with this YouTube channel called The Nerd Writer. He makes really beautiful, well articulated video essays
It was my goal to make something which was even slightly similar to what he makes. And I realized fairly early that it's not easy to do that. So that is someone have always looked up to. I always looked up to this guy called Shatab Gangwar, and I happened to be fortunate enough to be doing a podcast with him. So all of these Nice. people who I have seen growing up, like legit growing up, 2016 में तो मैं था ही मतलब 18-19 साल का, तब मैं यूट्यूब देखता था, इन लोगों से इंस्पायर हो गया, थॉट कि ठीक है यार इसमें ट्राई करा जा सकता है. So it's fortunate. I'm very lucky कि I have had the opportunity to interact with these people, to have Lovely. worked with them. ध्रुव के साथ भी मैंने podcast किया है, शताब के साथ, रणवीर के साथ I've got a good camaraderie going on. So it's more about the fact कि there's no particular favorite, but all of these people that I have grown by watching. इनका content, इनका style, इनका बोलने का तरीका, I've tried to imbibe all of these things consciously, subconsciously. तो हर तरफ से सीखने की कोशिश करनी चाहिए आपको. आई श्योर फॉर श्योर हैव ट्राइड टू डू दैट. वैसे कोई पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है, बट काफी सारे लोग हैं जिन्होंने काफी ज्यादा इंस्पायर किया है, एंड आई बीन Lovely. फॉर्चुनेट एनफ टू हैपन टू वर्क विद देम ओवर माय यूट्यूब करियर. सो थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ. आपने जो बोला कि आपने वीडियो आईपैड पे बनाया, दैट वाज अमेजिंग. आईपैड पे वीडियो बनाया हाँ और उसके बाद आपने उसको ड्राइव पे अपलोड किया. हाँ. व्हाट वाज द प्रोसेस? ड्राइव पे अपलोड किया, एडिटिंग टीम के पास गया या नहीं आपने नहीं खुद नहीं, एडिट किया? एडिटिंग हाँ. टीम और टीम तो अभी फेयरली रिसेंट चीज है. अच्छा. दो शुरू के 2.5-3 साल तो अपने आप ही करना पड़ता है ना सब कुछ. अच्छा. तो शुरुआत में तो मैंने खुद ही किया. जब मेरे पे तो आईपैड आप में नहीं था, आई हैड गूगल. दिस लैपटॉप, में लैपटॉप के फ्रंट कैमरे पे रिकॉर्ड करता था. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि फ्रंट कैमरा की ना क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है, तो मैंने बिना शक्ल दिखाए वीडियोस बनाना शुरू कर दिया. सिर्फ अच्छा. वॉइस ओवर करता था मैं, एंड उस पर एडिटिंग सीखता था और वो करता था. उसके लिए मेरे पे लैपटॉप था मेरा. तो 2.5-3 साल, आई थिंक माई फर्स्ट, इनफैक्ट ऑन माई मेन चैनल द वीडियोज दैट कम आउट आर स्टिल एडिटेड बाय मी. वो तो बाकी सारे जो चैनल्स हैं जिन पे थोड़ा रिलैक्स शेड्यूल रहता है, दैट आई कैन देन गिव देम टू द एडिटर, एंड फिर वो वहाँ पे काम हो जाता है. बट बाकी एडिटिंग मैंने खुद ही करी है. आई हैव ऑलवेज तो बीन अ फैन अपलोड ऑफ करने से डूइंग पहले एवरीथिंग कोई माई तीन सेल्फ चार चीजें जो ध्यान में रखने वाली हैं? फॉर एडिटिंग. बिफोर नहीं, एडिट हो गया, अपलोड करने से पहले तीन चार चीजें कोई ध्यान में रखने वाली हो? Yes, I think record करने से पहले भी I would advise a lot of people who make content to spend some time on the script or the outline of the video or what the video structure is going to look like. Because अगर आप उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हो ना, तो आपका शूटिंग और एडिटिंग और जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला टाइम होता है वो कम लगता है. आपको टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, बट अगर आप स्ट्रक्चर में, आउटलाइन में, स्क्रिप्ट में, रिसर्च में थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर लो, तो बाकी का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज वो बहुत क्लियर पाथ हो जाता है. एक बार आपने स्क्रिप्टिंग पे टाइम रिकॉर्ड स्पेंड कर लिया, फिर आपका प्रोडक्शन वाला जो फेज है, रिकॉर्डिंग एडिटिंग वाला, वो हो गया, देन आई थिंक स्पेशल फोकस हैज टू बी गिवन ऑन व्हाट थंबनेल यू आर मेकिंग एंड व्हाट द टाइटल ऑफ योर वीडियो इज गोइंग टू बी. अपलोड करने के बाद आजकल ये नया होना शुरू हुआ है यूट्यूब पे, दैट यू कैन एंड शुड ट्राई आउट अ फ्यू थंबनेल्स ऑन योर वीडियोस विद इन द फर्स्ट 15 days. पता चले कि कौन सी वीडियो, कौन सा थंबनेल ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देके आ रही है. बिकॉज देयर इज नो वन थंबनेल एंड टाइटल दैट विल वर्क फॉर अ वीडियो और एन ऑडियंस. जस्ट हैव टू ट्राई, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके, थोड़ा ए बी टेस्टिंग करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो दैट इज अ न्यू थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग इन यूट्यूब रिसेंटली. तो अगर इस पे आप कैचअप कर सकते हो, देन योर जर्नी ऑन यूट्यूब विल बिकम स्लाइटली ईजियर. इट विल टीच यू मोर अबाउट हाउ योर ऑडियंस इज रिएक्टिंग टू योर कंटेंट. ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है. हम अपने हर गेस्ट से एक चीज पूछते हैं. या Where will you be next year, 20th August 2022? मैं ना इसको जवाब देने से पहले पिछले साल के 20th अगस्त पे बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ था, एंड हैड आई एंटिसिपेटेड वेयर आई वुड बी एट दिस मोमेंट. सो 20th August 2020 आई वाज फ्लाइंग बैक फ्रॉम लंदन टू दिल्ली, वेरी डिजेक्टेड इन लाइफ कि यार मेरा जो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस है किंग्स लंदन का, वो पूरा अच्छे से नहीं हो पाया. आई हैड नो क्लू कि मैं आगे जाके जॉब करूंगा क्या करूंगा. सो कंसिडरिंग द ईयर दैट हैज गॉन बाय, इट हैज बीन प्रीटी वेल. तो आई हैव रियलाइज्ड एंड लर्नड कि इतना डिजेक्टेड नहीं होना चाहिए लाइफ में, इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए. सो प्रोबेबली 20th August 2022 आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी इन अ मच हैप्पियर, मच बेटर प्लेस देन आई एम एट राइट नाउ. मेरा कंटेंट हो सकता है ज्यादा अच्छा चल रहा हो. The only thing that I want to be is happy and content with whatever I have at that moment. वो हो Lovely. जाएगा तो फिर और कोई टेंशन नहीं है लाइफ में. Awesome. So, ladies and gentlemen, boys and girls, this brings us to the end of this episode with Vedant Rusty. I loved it. RUSTY. Har alphabet se ek YouTube channel hai. I'm going to put links to all the channels over here. You can find all of them. So, and all of you people know, show shuru karne, khatam karne ke baad, tell me one thing that you've learned from Vedant. Make an Instagram post
tag the Ask Avi Arya channel, and every Sunday I'm going to courier you a book on entrepreneurship to your house to say thank you for following this channel and listening and taking action. With that, once again, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls, signing off for now.